लैक्टोज एक्सट्रैक्शन का जो कि मिल्क में से हमने लैक्टोज को एक्सट्रैक्ट करना है, जिसके लिए मैंने मटेरियल लिया है 100 ml मिल्क। और जो दूसरा ये वाला जो मेरा बीकर में है, ये 1 नॉर्मल HCl का सोल्यूशन है। मैंने एक दूसरे उस बीकर में 100 ml मिल्क लेकर उसके अंदर इस 1 नॉर्मल HCl के सोल्यूशन में से 10 ml जो है डालना है। अब मैंने ये 100 ml जो है मैंने मिल्क लिया है, इसके अंदर मैं 10 ml 1 नॉर्मल HCl का सोल्यूशन ऐड कर रहा हूँ। जी, तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ लैक्टोज हो रही है फ्रॉम मिल्क, तो फिल्टर कर रहा हूँ। फिल्ट्रेशन ऑफ केसीन हो रही है। आप देखिए इसका कलर नीचे डिफरेंट है, प्रेसिपिटेट बन गया था केसीन का। अब मैं इसको फिल्टर कर रहा हूँ, तो नीचे आप देखें ये फिल्टर हो रहा है। केसीन प्रेसिपिटेशन, ये जो है ऊपर हमारे पास केसीन प्रेसिपिटेट बन के रह गया है, किनारे देख सकते हैं फॉर्मुलेट हो गया है और नीचे ये फिल्ट्रेंट बन गया है। भी हम इसके अंदर 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर रहे हैं। फिल्ट्रेट को बॉयल कर रहे हैं। Boiling the filtrate of casein. Now filter the solution which we heated. We add 4 ग्राम of charcoal। उसके बाद हमने 200 चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल के डाले, इस वजह से ये डीप कलराइज हो गया। डीप कलराइज करने के लिए हमने चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल ऐड किया। ये है एक्टिवेटेड चारकोल, charcoal activated pure। 100 ml methanol into the solution। And shake properly। Now we filter the solution। Here we get filtrate, here we get filtrate, we get clear
filtrate when we filter our solution.